Civil society is very important in our life. We are all living inside the civil society. Civil society is giving us opportunities. Civil society is giving us um, safety, security. Civil society is giving us economic opportunity, political opportunity, everything. So, to understand the meaning of civil society, it is required to learn the civil society, then to know the rise and theoretical development of the concept, to describe the role and significance of the civil society. So, these are the objective of the civil society, to know the rise and programs of the international civil society. Now, civil society is the combination of total voluntary civic and social organizations and institutions, which is the basic of a functioning society as against to state commercial institution market. So civil society is a society. It is it is a sum total of the voluntary civic and social organization. So many organizations are there in the civil society. Now, civil society meaning and history. Civil society, the set of various associations which are neither the part of the state for family. Therefore, civil society includes voluntary associations. The term has been used. This is the voluntary association. This is not an any profitable organization. We are staying inside the society. We are taking so many opportunities. So that is why we are having some responsibility towards the civil society, and civil society is also have some responsibility to give safety, security, opportunity to us. Now, the nature of civil society. Civil society is voluntary association. It is it the civil society believe in law and the relation based on concept of force. Civil society is the different form state and market. It is not interested in power, politics, and decisions of the state. Civil society is non-profitable association. Totally, civil society is became the part of the democracy. So civil society is a voluntary organization. It is a democratic organization. We are enjoying our liberty, equality, justice inside the civil society. Role and significance of the civil societies. Civil society's role can be understood through following: role in development and alternative modes. Now, role as resource centers. Civil society carry out studied and research on the various social programs, problems, work for democratization of society and administration, to establish the developed democratic culture, transparency, efficiency. So, inside the civil society, so many non-governmental organizations are there. That is very efficient organization. Civil society should be transparent. The democratic culture should be there, because inside the civil society all are very efficient. They are we are very comfortable in the civil society. Within the civil society, we are getting the safety, security. Securely we are staying over there. We are enjoying our every culture, caste, creed, freedom, everything. So the lifestyle of the inside the civil society, we are enjoying our lifestyles. Inside the civil society, we are getting all type of opportunities. Inside the civil society, we are getting all kind of justice. We are getting our human rights. We are enjoying our human rights. So inside the civil society, all is there. Now, International Executive Committee, ICE, led by the chairman, consists of 8 members. International Secretariat. The objectives. What are the objectives? Contribute to the observance through the World Human Rights, to promote awareness of Universal Declaration of Human Rights and other documents, to oppose violation
of the rights of personal freely to express his opinion and free from the discrimination based on any kind of disparities, to prevent arbitrary detention. So all these things are there. Now, women rights are enjoyed in the civil society. Children rights are also there in the civil society. Ending, then abolition of the of death penalty is also there inside the civil society. This is the campaign. Campaign means we are demanding all these things. Women rights we are demanding, proper child rights, children's rights we are demanding. Ending torture means exploitations end करना है civil society में, that is also we are demanding. Then right for the refugees, those who are vagabond, those who are refugees, उनके पास भी right होनी चाहिए. उनको भी जो basic needs है वो मिलना चाहिए. Right or right to prisoners and conscience. So those who are the prisoners, they are culprit, they are criminals, but then also they have right to life. That is why sentence to death को death penalty को abolition करने के लिए बोला. Protection of the dignity, सब इंसान के ह्यूमन को का डिग्निटी इनमें सिविल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स. सिविल सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज ये है कि वी आर स्टेइंग इनसाइड द सिविल सोसाइटी, सो वी शुड अवेयर रिगार्डिंग आवर ह्यूमन राइट्स. हम ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन राइट्स के ऊपर अवेयरनेस हमें रहना चाहिए. विदाउट अवेयरनेस वी कैन नॉट एंजॉय द ह्यूमन राइट्स. हमारे पास ह्यूमन राइट्स है, कोई हमारा ह्यूमन राइट्स को वायलेशन कर रहा है और हमें वो मालूम ही नहीं है, so this should not be done. That is why human rights are very much important, and protection of the human dignity. So all over the world, people in poverty are demanding dignity. They want an end to injustice and exclusion that keep them trapped. डेथ पेनल्टी शुड नॉट बी देयर. बहुत प्रॉब्लम हुआ, मर्डर केस, रेप केसेस ये हुआ तो ही डेथ पेनल्टी होनी चाहिए. अदरवाइज किसी रीजन से किसी के ऊपर, किसी का मर्डर का केस दूसरे के ऊपर जाके ये सब डेथ पेनल्टी एबोलिशन करने के लिए बोला है. मोर देन 2/3 ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एबोलिश द डेथ पेनल्टी इन लॉ एंड प्रैक्टिसेस. हमारे इंडिया में भी डेथ पेनल्टी ऑलमोस्ट एबोलिश्ड है. बट अगर मर्डर का कुछ क्राइम हुआ और रेप केसेस का कुछ क्राइम हुआ तो बहुत अगर बहुत ही गंदा टाइप के क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गए तो ही डेथ पेनल्टी होती है. देन वुमेन राइट्स. सो violence against women is often ignored and rarely punished. Women and girls suffer disproportionately from violence, both in peace and in war. At the hand of state, the community and the family, a life free from violence. So all these things comes under the women rights. Women rights को आगे लेके जाने से वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है, घर पे जो वायलेंस होता है, वुमेन्स को जो अब्यूजेस करते हैं, डाउरी सिस्टम थ्रू जो होता है, वर्क प्लेस में वुमेन के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन होता है, गर्ल चाइल्ड के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं, आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम होता है, इसके लिए वुमेन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, counter-terrorism justice. Government response to threat the terrorist attack and led to working to the framework of the international human rights. States are reasons. तो काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म अगर होती है, टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको काउंटर करने के लिए राइट ह्यूमन बीइंग के पास है. हम सेफ्टी के लिए, हमारे खुद के बचाव के लिए हम ये काउंटर अटैक कर सकते हैं.
So in 1970s, during this period, continued to work for prisoners of conscience, but besides it widened. Now रोल ऑफ 70s में ह्यूमन राइट्स का जो पोजीशन था 80s में वो पोजीशन ह्यूमन राइट्स का और इंक्रीज हुआ एंड 90s में आके लोग समझने लगे व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स and what is our basic human rights or and civil society is giving us this kind of human rights. Civil society is giving us right to life. Inside civil society only we are getting all this opportunity. Inside civil society only women are safe. Inside civil society only women can go against the exploitations. Women can go against the uh, different crime happening in the society. अगर ऐसे होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके वुमेन कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं. देन राइट्स चिल्ड्रन राइट्स में सबसे पहले चाइल्ड लेबर बंद करना आता है. तो सिविल सोसाइटी ने 14 ईयर्स तक कंपलसरी फ्री एजुकेशन कर दिया एंड चाइल्ड लेबर को स्ट्रिक्टली बंद किया हुआ है बिकॉज चाइल्ड लेबर एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. 14 ईयर्स के पहले 18 ईयर्स के पहले ऑलमोस्ट किसी को काम पे रख नहीं सकते. इसके लिए सिविल सोसाइटी अलाउ करते नहीं है. सो इनसाइड द सिविल सोसाइटी वी कैन से कि civil society is a society. It is a voluntary organization. It is non-profitable organization. Human beings are feeling safe, secure inside the civil society because when we are the part of the civil society, we are getting so many opportunities. We are getting so many rights. We are getting safety. We are getting security. We are getting economic opportunity. We are getting political opportunity. So all these things we are getting in the civil society. Civil society is very much important in our life. Without civil society we cannot stay alone. Human being is a social animal. So civil society में हमको रहना ही है. सिविल सोसाइटी अभी सोसाइटी में नहीं रहते. सोसाइटी में रहने के लिए फिर सिविल सोसाइटी के ऊपर हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो सिविल सोसाइटी हमें कॉमन गोल देते हैं, लॉ देते हैं, रूल्स देते हैं, रेगुलेशन देते हैं, वी हैव टू फॉलो दैट. क्योंकि so when we are staying inside the society, हमारे एक एक जो काम होती है वो बाकी लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं. अगर हम अभी पैंडेमिक सिचुएशन का एग्जांपल ले ले तो हमारा एक जन का बाहर घूमना फिरना इज वेरी मच डेंजरस फॉर अदर पीपल. इसीलिए सबके अच्छे के लिए, खुद के भलाई के लिए भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, प्रोटोकॉल मेंटेन करना. सो दिस इज कॉल्ड सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी अगर हमें इतना प्रोटेक्शन देते हैं, सोसाइटी में रह के हमें शांति मिलती है, तो फिर ये सिविल सोसाइटी से हमें इतना कुछ मिलती है. सो हमें वी आर ऑल्सो हैविंग दिस responsibility towards the civil society that civil society को भी हम अच्छे से चलाए. सिविल सोसाइटी में डेमोक्रेसी रहे. सिविल सोसाइटी से हमें जस्टिस मिले. सिविल सोसाइटी डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में डेकोरम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी कुछ भी कर लेंगे, दूसरों को प्रॉब्लम हो जाएगा. ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है. एंड फॉर दैट रीजन ये सिविल सोसाइटी में रहना एंड उसको लेके चलना, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिविल सोसाइटी. So civil society is the sum total of the voluntary organization. Civil society is the sum total of any non-governmental organization. Those who are working for the people, those who want to develop the personality for the people. To understand the meaning of the civil society, we should learn regarding the civil society. Then significance, we should know the significance of the civil society. सिविल सोसाइटी का क्या मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत अच्छे से हमें जानना पड़ता है. देन क्लासिकल पीरियड में प्लेटो, एरिस्टोटल डिफाइंड द सिविल सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे.
The civil society matlab where the people are enjoying their good life. Civil society should be run in a very welfare manner, in a very proper manner. So this is called civil society. According to Plato, the individual carry out their activities and believe among them in the civil society. For Aristotle, the state is a polity which is ruled by the middle class, and the police was an association that enables citizen to share the uh, various tasks and ruling. सो सिविल सोसाइटी में दो टाइप के लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल. एक रूल्ड, एक रूलिंग क्लास. दोज हु आर द रूलिंग क्लास दे शुड हैव सम सिंपैथी. दे एंड ये रूल्ड एंड रूलिंग क्लास दोनों को कोऑर्डिनेशन करके चलना चाहिए, तो ही सिविल सोसाइटी में काम ठीक से हो सकता है, ठीक से हो पाएगा. एंड रूलिंग क्लास अगर डोमिनेट करना शुरू करेंगे, रूलिंग क्लास अगर अपना मनमानी करना शुरू करेंगे, then it is very difficult to run the country properly, and it should not be done. So this is called civil society. So again, one concluding thing is there. The civil society, human being are saying inside the civil society, human being are getting the opportunity from the civil society. Human being should have some responsibility to the civil society, and civil society should give some opportunity to the human being also. According to Plato, individual carry their activities, all are carrying their activities inside the civil society in the proper manner. So this is called civil society again.